बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक जी फॉर अनदर लाइव स्ट्रीम। आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 इंतहाई अहम मैच, इंतहाई अहम मुकाबला इस वक्त जारी है ग्रुप ए का। और ये मुकाबला मैं अगर इसको रेट करूं तो मैं इसको कहूंगा इट्स अ लिटरली अ क्वार्टर फाइनल, क्योंकि जो तीन टीमें जिनके दरमियान मुकाबला है इस ग्रुप में, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान, उसमें इस मुकाबले के ऊपर बेसिकली ये चीज डिपेंड कर रही है कि दूसरी टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ कौन सी होगी। आइदर इट्स इंडिया और साउथ अफ्रीका, दिस विल बी डिसाइडेड बाय दिस मैच। और इसके बाद जो टीम यानी जो मैच जीतेगी उसके लिए ब्राइट चांसेस हो जाएंगे कि वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करे। सो दैट्स व्हाई इट इज लिटरली a quarter final match of this ICC Women's World Cup Group A between South Africa and India। और इंडिया को जनाब 158 रन जो है यहाँ पर बचाने हैं, डिफेंड करने हैं। 159 रन्स का टारगेट दिया है इंडिया ने ये मैच जीतने के लिए साउथ अफ्रीका को। और जिस तरह की इंडिया की बैटिंग लाइनअप है, इट इज जस्ट अ बिलो पा। और जिस तरह की साउथ अफ्रीका की कैपेबिलिटीज एंड स्किल्स हैं, दिस इज अ चेजेबल टारगेट। सो वी एक्सपेक्ट अ वेरी वेरी interesting encounter between these two sides in this ICC Women's World Cup। हेडिंगले लीड्स के मुकाम पर ये मैच इस वक्त जारी है और पहला ओवर साउथ अफ्रीका इनिंग्स का जारी है और 1 रन बगैर किसी नुकसान के स्कोर हो गया है यहाँ पर साउथ अफ्रीका का। और ओपनिंग बॉलिंग के लिए आई हैं शिफाली वर्मा। और अगर बैटिंग की बात करें तो साउथ अफ्रीका की जानिब से उनकी कप्तान वॉलवर्ट और ब्रिट्स ने इनिंग्स का आगाज किया। इस गेंद को फ्लिक कर दिया ब्रिट्स ने, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है और बिल्कुल बाउंड्री लाइन के ऊपर इसको फील्ड किया फील्डर ने। इस दौरान 3 इनफैक्ट 2 ही रन बने। तो पहले ओवर के बाद इंडिया खिलाफ साउथ अफ्रीका के हैं 3 बगैर किसी नुकसान के। और बहुत ही जबरदस्त मौसम यहाँ हेडिंगले लीड्स में। इनफैक्ट सॉरी, ये मैच जो है हेडिंगले लीड्स पे नहीं है बल्कि मैनचेस्टर ओल्ड ट्रैफर्ड में है। अभी मुझे इसकी आउटलुक देख के अंदाजा हुआ है कि दिस इज नॉट हेडिंगले लीड, इनफैक्ट दिस इज ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर। डक्सन है, इसके बाद वेन निक्रक, कैप, डिक्लर्क, ट्रायन। तो ये सारी जो प्लेयर्स हैं इनकी अच्छी बैटर्स हैं। सो वी एक्सपेक्ट अ वेरी वेरी गुड मैच एंड दिस इज लाइक आई सेड a literary quarter final between these two teams। और नंदानी शर्मा अब बॉलिंग के निशान पर पहुंच गई हैं दूसरा ओवर करने के लिए। वेलवेट सामना करेंगी ऑफ स्टंप से बाहर। ये गेंद वेलवेट डिलीवरी, गेट अवे विद अ वाइट। अगली गेंद के लिए तैयार। इस दफा कट कर दिया है, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है एंड आई गेस बाउंड्री लाइन पार कर जाएगी 4 रन के लिए। सो पहली बाउंड्री हासिल होती हुई साउथ अफ्रीका को। अच्छी तरह इस गेंद को मिडल किया और ना सिर्फ मिडल किया बल्कि टाइम भी किया और प्लेस भी किया। थर्ड मैन के ऊपर कोई फील्डर नहीं था, थर्ड मैन ऊपर था। सो वंस इट्स क्रॉस द 25 यार्ड सर्कल, वैसे तो 30 यार्ड सर्कल होता है लेकिन वुमेन्स क्रिकेट में 25 यार्ड सर्कल है, तो इट वाज ऑलवेज गोइंग फॉर अ बाउंड्री। नंदानी और अब जो विकेट कीपर है वो ऊपर आ गई हैं। शॉर्ट गेंद थी लेकिन पनिश करना चाहिए था, फायदा नहीं उठा सकी बैट्समैन, बैट्सवुमेन इस गेंद का। और गेंद चली शॉर्ट मिड विकेट की जाने। बड़ा खूबसूरत मंजर
ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर के मैदान के ऊपर सफेद कलर के जो बादल हैं वो कहीं ना कहीं छाए हुए हैं, और सूरज भी निकला हुआ है। और कहीं ना कहीं जब वो बादल सूरज के सामने आते हैं तो आधे ग्राउंड पे जो है वो साया होता है, और आधे ग्राउंड पे जो है वो धूप निकली होती है। तो एक धूप और छांव का भी यहाँ पर मुकाबला जारी है, साउथ अफ्रीका और इंडिया के अलावा। विन प्रिडिक्टर जो बता रहा है 56% साउथ अफ्रीका, 44% इंडिया। सो साउथ अफ्रीका को एज दे रहा है यहाँ पर विन प्रिडिक्टर। अगली गेंद नंदानी, शॉर्ट गेंद थी, और एक मतलब फिर आई थिंक यहाँ फायदा उठाने में नाकाम रही ब्रिट्स। यकीनी तौर पर यहाँ पर चौका होना चाहिए था। दो के बाद 8 साउथ अफ्रीका वुमेन विदाउट एनी लॉस। बुक करें। 8 बगैर किसी नुकसान के जमीमा रेडिगोर्स का पोस्टर यहाँ पर लगा हुआ है स्टैंड्स में। आई लव मोर देन आई लव मोर जिमी देन माय मदर का पोस्टर यहाँ पर अवेजा है वेलियन एंड पे। पॉइंट्स टेबल अगर देखें, ग्रुप ए में इंडिया की टीम 2 मैचेस में 4 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पे है, और साउथ अफ्रीका की टीम 2 मैचेस के साथ 2 पॉइंट के साथ चौथे नंबर पे। तो आज अगर साउथ अफ्रीका यहाँ पर जीत जाती है तो फिर पॉइंट्स टेबल में बड़ा रद्दोबदल आ जाएगा, और दूसरी पोजीशन गालिबन यहाँ पर ले जाएगी साउथ अफ्रीका। अरुंधति अब बॉलिंग के लिए आ गई हैं। मीडियम पेसर, और आज जो है वो फीफा वर्ल्ड कप का भी एक अहम मैच है, सऊदी अरेबिया वर्सेस स्पेन, जो कि 7 बजे शुरू होना है। शॉर्ट गेंद थी और कलाइयों के सहारे इसको खेल दिया, लेकिन अच्छी तरह फील्ड प्लेस की हुई है यहाँ पर इंडियन कैप्टन ने। डीप मिड विकेट को उन्होंने बिल्कुल वाइड रखा हुआ है टुवर्ड्स लॉन्ग ऑन। सो एक्सलेंट फील्ड प्लेसमेंट। इस दफा इस गेंद को जबरदस्त तरीके से खेल दिया है स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। इस दफा शॉर्ट गेंद का भरपूर फायदा उठाया कप्तान वेडवेट ने, और इसको पहुंचा दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 70 मीटर के छक्के के लिए। इस गेंद पर पहले उन्होंने रूम लिया और शॉर्ट गेंद थी, फिर उसको पहुंचाया वहां पर जहां पर वो डिजर्व करती थी। पहला छक्का इस इनिंग्स का साउथ अफ्रीका की जानिब से। वॉलवर्ट पुल शॉट वर्सेस पेस 322 रन। सो शी इज muck with the pull shots, and this is his highest scoring shot as well.
142 to win. 3 overs के बाद 17 so far. It's a decent start for South Africa. Especially they haven't lost a wicket, so this is important. Siri Chorani, a नई bowler आ गई, left arm spinner. Valverde batting on 14 from 7, 11 rather. Down the wicket he comes, and she wants to wax it over the mid wicket, but his checks our stroke at the last moment. 159 to get. Already South Africa 17 for no lost. Chirani, and that's again Walbert comes down the track, yokes himself, and unable to get under the ball. Deep mid wicket and deep long off is the two outside 30-yard circle, 25-yard circle fielders for this left arm Sri Chorhani. This time she whacks it, but straight to deep mid wicket for a single. This time flexed away towards mid wicket. Going to be another easy single here for South African batter. 3.5 over. Excellent over from Siri Chorhani. Only give away 2 runs. The Indian supporters are absolutely excited at the moment. This time again yoked him. So very good over from Siri Chorhani. Only gives away 2 runs despite quite a few efforts from Walbert and Brish to hit a boundary, but both of them unable to do so. The crowd is building up here at the Old Trafford, Manchester, one of the better crowds after India versus Pakistan match. Still, it is not full by any means, the stands, but you can say more than 50% stands are filled, which we haven't seen any other matches in Pakistan or India. Women's Shifali to continue the leg break. Bit of a subdued start from South Africa. 4.1 overs, 24 no loss. धूप एक मरतबा फिर यहाँ पर गायब हो गई है मैनचेस्टर से, ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में हल्की हल्की हवा चल रही है. शिफाली यहाँ पर अगली गेंद करेंगी. सामने है वॉलवर्ट. और अच्छी गेंद, फुल टॉस थी लेकिन फायदा नहीं उठा सकी क्योंकि यॉक कर गई अपने आप को. हर गेंद पर यहाँ चार्ज करने की कोशिश कर रही हैं साउथ अफ्रीकन बैटर्स. आई थिंक दे रियली नीड टू avoid the premeditation. This time another dot ball. So Walbert and Brits feeling the heat, feeling the pressure, and South Africa now reduced to 51% as per win predictor, and India increased to 49% now. It's almost even Steven at the moment. Down the wicket he comes, and he smoked it over the head of the short mid off for 4. So a welcome boundary here for South Africa. Much needed because the pressure was building up, and he broke the shackles
She break the shackles by hitting a good boundary. Still not get to the pitch of delivery, but still able to connect it, and it is over the short mid off fielder for four. This time she played it towards deep mid wicket. It is a fielder. Velvet will be key here for South Africa for this chase. Velvet has started scoring more runs down the ground in his career. So another over gone here, 5 gone, 25 for no lost. South Africa women's chasing 159. And today we have a big match of FIFA World Cup. Hopefully we will cover this one alongside this match. It will start 9 p.m. Pakistan Standard Time. A lot of hopes from Saudi Arabia side we are carrying, but let's see what happens. Sharani to continue down the wicket he comes, and once again unable to connect it in the middle of the bat, middle of the stick, and finding the fielder. Not able to place, not able to pick up the gaps. Captain Velvet. This time she drops it. No, it's taken. Excellent catch. Siri Charani picks up a big wicket, a vital wicket of Velvet, and South Africa lose their first. Caught behind, in fact, caught and bowled. Caught and bowled by Siri Charani, and Velvet looking to hit very hard. Doesn't get it to the middle of the bat, but an excellent catch, return catch by Sri Charhani to dismiss the captain of South Africa, Laura Velvet, for 20. It's 25 for 1. South Africa in a bit of a trouble. So यहाँ पर मिनी ब्रेक हुई है जिसमें इंडियन कोचिंग स्टाफ मैदान में आ गया और अपनी प्लेयर्स को सलाह मशवरे देने में मसरूफ है। इंडिया की टीम इस वक्त टॉप पे है, 25 for 1 now. रन ज्यादा लीक नहीं किए पावर प्ले में इंडियन वुमेन्स ने, अंडर चेक रखा ओपनर्स को और आखिर में बड़ी विकेट लोरा वेलवेट की हासिल हो गई। 5.2 overs, 25 for 1. So this power play definitely went in favor of Indian side. वेलकम करते हैं आप सब लोगों को इस लाइव स्ट्रीम में इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीकन वुमेन्स मैच के ऊपर। और कल पाकिस्तान जिस तरीके से बांग्लादेश वुमेन्स से हारा है, 123 रन भी करने में नाकाम रहा पाकिस्तान की टीम, और इस टूर्नामेंट से बाकायदा तौर पर अब आउट हो गई है पाकिस्तान वुमेन्स की टीम। पहली टीम है जो टूर्नामेंट से सबसे पहले बाहर हो गई है, दैट इज पाकिस्तान वुमेन्स साइड। सो न्यू बैटर आई हैं यहाँ पर डर्कसन साथ देंगे अब ब्रिट्स का। Siri Charhani to continue. Excellent spell so far. 1.2 over 1 for 2.
Another dot ball. So Charani is doing an excellent job here for captain, bowling wicket to wicket, not giving away anything away. And this is an excellent catch. And have a look at Simriti Mandana. He is absolutely ecstatic, jubilant. This time bowled him absolutely neck and crop. And back to back wickets for India. And South Africa is in deep trouble here, losing two quick wickets in 1 hour of Sri Charani and 25 for 2. And I think this is a big over in this context of the game. It's looking to heaved it across the line, missed the line, ball pitched in the leg stump, spun a little bit, and hitting the off stumps. So second wicket goes down for South Africa, and Nori Dirksen going back without disturbing the scorers. It's 25 for 2, South Africa women's, and this is double wicket over for Siri Chorahani. So India is right on top at the moment. Marizanne Kapp, the new batter. The fast bowler. I think she's coming for a pinch hitter or what? Flight to delivery. Excellent over. Excellent over. It seems to be a double wicket pattern coming up. As we are going to witness a double wicket pattern. Yes, it's a double wicket pattern here for Sri Sharani. Excellent over. Excellent power play for India. 6 score, 25 for no, 25 for 2.
वेलकम बैक जनाब। सीएसके फैंस, वालेकुम सलाम। साउथ अफ्रीका स्ट्रगल करती हुई रिक्वायर्ड रेट 9.77 ऑलरेडी पहुंच गया है। सो इस स्टेज के ऊपर इंडिया के 7 ओवर के बाद 66 रन थे। 66 पे 2 थे इंडिया के, जबकि साउथ अफ्रीका के 32 पे 2 हैं। सो मोर देन हाफ रन लेस 7 ओवरों में थे साउथ अफ्रीका के। डपीती कंटिन्यू करेंगी ब्रिट्स को, और अब जो है 4 फील्डर अब बाहर रख दिए गए। स्क्वायर लेग, मिड विकेट, लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ। रिवर्स स्वीप, बेहतरीन स्ट्रोक 4 रन के लिए। पहली गेंद पर चौका ब्रिट्स का, वेलकम बाउंड्री, और थोड़ा सा मोमेंटम यहां पर चाहिए साउथ अफ्रीका विमेंस को मैच में वापस आने के लिए। एक दो बड़े ओवर्स, यानी जिसमें 10-12 रन आए, यानी 2 ओवर में 25 रन आएंगे तो मैच में कहीं वापसी होगी इनकी, वरना रन अवे विद द शो हो जाएगा इंडिया के लिए। इस दफा लेग स्टंप से बाहर गेंद स्वीप किया 1 रन के लिए। अंपायर की तरफ देखा, लेकिन चांस नहीं है, चांस नहीं है यहां पर रन आउट होने का। और यहां पर स्केप हुआ, ऑलमोस्ट बॉल जो है वो बल्ले के बैक साइड पे लगी। डबल बैट तो नहीं हुआ। जपीती almost return catch. So India is doing an excellent bowling spell here. 38 for 2. अगली गेंद दपीती, बॉलर की जानिब, डॉट बॉल। आखिरी गेंद ओवर की, रिवर्स स्वीप, आउट होने का खतरा। ओ जस्ट ओवर द हेड ऑफ द शॉट थर्ड मैन फील्डर। लकी एस्केप फॉर ब्रिट्स। 2 रन बन गए, तो 8 के बाद 40 बहुत ही मुश्किल हदफ होता हुआ 9.92 अब रिक्वायर्ड रेट, इंच क्लोजर टू 10 runs and over.
Arundhati continuing. बांध के रखा हुआ है इंडियन बॉलर्स ने साउथ अफ्रीकन बैटर्स को, बिल्कुल चांस नहीं दे रहे उनको कि अपने बाजू खोल सके। और रिक्वायर्ड रेट इसी प्रोसेस में अब 10 को छू गया है। 70 बॉलों पे 118 रन, नियरली इम्पॉसिबल होता जा रहा है अब साउथ अफ्रीका के लिए चेस करना। जिस तरह मैंने कहा कि 2-3 अब बड़े ओवर चाहिए होंगे मैच में वापस आने के लिए। कुछ 12-13 रन वाले ओवर चाहिए इस वक्त साउथ अफ्रीका को, लेकिन यहाँ पर रन्स बनाना बहुत मुश्किल किया हुआ है इंडियन फील्डर्स ने। बॉलर्स ने मौका नहीं प्रोवाइड कर रहे कि यहाँ पर एक्सप्रेस कर सकें साउथ अफ्रीकन बैटर्स अपने आप को। फील्ड प्लेसमेंट बहुत अच्छी है और रिक्वायर्ड रेट 10.17 हो गया, मोर देन what you call it 10 runs per over now। तो आखिरी 10 ओवरों में 100 रन से जायद बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा यहाँ पर साउथ अफ्रीका के लिए। Another single to end the over, still one ball to go in fact। Inside out over extra cover, beautifully played by Kapp, and a much needed boundary here for South Africa. They need many more to come back into this game. 9.1 overs, 49 for 2. South Africa still needing over 100 runs at the rate of over 10 runs per over. We welcome all of you in this live stream between India versus South Africa women's, literally a quarter final. Whoever wins this makes his position strong for the qualification of semi-final, and Australia is already having 1 foot into the semi-final, and the other team is looking to consolidate their position in this Group A. This time is slow accepted. Will it go for a 6 or it is a catch? No, it is dropped and it's a 6. So this sort of an over needed for South Africa. It was a good try in the deep, but she unable to catch it, and I think it went for a 6.
57 for 2. Short gain, and she put it away towards cheap mid wicket for a single. So 9.5 overs. Still the current run rate not even reached 6, and the required is reaching towards 11 now. दस के बाद जी 59 पे 2. So still 59 for 2 after 10. So 10 ओवरों में 100 रन चाहिए एग्जैक्टली यहाँ पर आखिरी 10 ओवरों में 100 रन चाहिए साउथ अफ्रीका को. आई थिंक इट्स अ रियल टफ आस्क, real tough ask to say the least. They need, I think, Cap to play a gem of a knock in order to make some sort of a chances for Team South Africa to win this match. Other than that, they are down and out. Otherwise, they are down and out, like I told you. In the air, and I think just escaped. Nandani to continue and looking to heave it over the infield. Didn't catch it with the bat. It's a dot ball. यार फीफा का क्या बना आज? फीफा स्कोर, फीफा वर्ल्ड कप लाइव.
स्पेन और सऊदी अरेबिया का जो मैच है वो इस वक्त 0-0 से बराबर है। ग्रुप एच का मैच, स्पेन वर्सेस सऊदी अरेबिया। एक चौका भी लग गया यहाँ पर मंदानी को, नंदानी राधा। 8 मिनट में 0-0 से मैच बराबर है ग्रुप एच का स्पेन और सऊदी अरेबिया का। इस दफा स्वेप किया और गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है। अच्छी फील्डिंग वहां पर फील्डर की, दूसरे रन के लिए वापस आई। कैप कैप का स्कोर बढ़ते हुए 24 हो गया 20 गेंदों पर। तो कैप इज लुकिंग बिट मोर एग्रेसिव, बिट मोर इन टच। 11 के बाद 67, और पहली दफा अब साउथ अफ्रीका का स्कोर जो है या रन रेट जो है वो हमें 6 से ऊपर मिला है। सो लेट्स सी। सीमा बैक ऑफ द हैंड बॉलिंग कर रही है यहाँ पर इंडियन पेसर। डी क्लर्क, वैन न्यूरक, Tryon, Jafta, Ismail, Khaka, and Mlaba to come for South Africa. 67 for 2 after 11. I will be right back with you guys.
65 बॉल 35 बॉल पे 63, सीधा खेला है डाउन द ग्राउंड, वन बाउंस फॉर 4। सो मैच में काफी हद तक अब इंटरेस्ट आ चुका है। 34 गेंदों पर 59, यानी यू कैन से दैट मैच इज नाउ little bit of interesting because South Africa only 2 down, and 2 set batter right now at the crease. So this will be a edge here for South Africa. आज बांग्लादेश को शिकस्त हुई तीसरे टी20 में भी, और 3-0 से बांग्लादेश ये सीरीज जो है वो हार गया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। और इस गेंद को रैम शॉट खेला है, couple of bounces into the fence for 4. So प्रोडक्टिव ओवर आता हुआ यहां पर साउथ अफ्रीका के लिए। कैप पहुंच गई है 33 बॉल्स पे 46 रन पे, और दूसरी एंड पे जो ब्रिट्स है शी इज बैटिंग ऑन 37. So an excellent knock here from Kapp. Kapp is turning out to be a one great all-rounder for South Africa. डीप स्क्वायर लेग को अब ऊपर बुला लिया गया और फाइन लेग पीछे, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, और हरमनप्रीत कौर थोड़ी सी प्रेशर में दिखाई दे रही है यहां पर। इस गेंद को भी स्वीप किया इस दफा स्क्वायर लेग की जानिब। क्या गेंद बाउंड्री लाइन पार कर जाएगी? जी हां, जहां से फील्डर हटाया वहां पर बाउंड्री लगा दी है। हरमनप्रीत कौर हंस रही है गुस्से में कि भाई मैंने स्क्वायर लेग से फील्डर हटा के फाइन लेग के ऊपर किया, फाइन लेग को इधर से हटा के पीछे किया, तो इसने स्क्वायर लेग के ऊपर इस दफा मार दिया। सो 50 रन यहां पर कंप्लीट किए हैं कैप ने 34 गेंदों पर। धुआंधार इनिंग्स, और मैच में वापस ले आई है साउथ अफ्रीका को इस इंपॉर्टेंट मैच में। मैरिजैन कैप इस इनिंग्स में 50 रन उन्होंने स्कोर किए, 36 लेग साइड पर, 14 ऑफ साइड पर। इस गेंद को भी खेल दिया डीप स्क्वायर लेग की जाने, दूसरे रन के लिए जल्दी करनी पड़ेगी, और दूसरा रन भी हासिल कर लिया मैरिजन कैप ने। और इस ओवर में लगभग 15 रन मिले हैं साउथ अफ्रीका को। 52 पर पहुंच गई कैप, 37 रन स्कोर कर रखे हैं यहां पर ब्रिट्स ने। क्या बना जी? ओ माय गुडनेस, माय गुडनेस। स्पेन 3, Spain 3 and Saudi Arabia 0. तो 5 ओवर में 48 रन, यानी कि 10 से कम रह गए। प्रीति, ओ would have been close, but I think offside the line, offside the line. Looking to swept it and hit it offside the line of the off stump. 29 बॉलों पर 47 रन की आवश्यकता है, जरूरत है, नीड है। साउथ अफ्रीका विमेंस को ये मैच जीतने के लिए, और
अपने चांसेस बनाने के लिए सेमीफाइनल के लिए, literally a quarter final for both of teams, especially for South Africa, or pre-quarter final, what you call it. तीन सिफर की बर्तरी हासिल है स्पेन को फीफा वर्ल्ड कप में सऊदी अरेबिया के खिलाफ, और अभी पहले हाफ के 30 मिनट हुए हैं, तो बहुत ही अटैकिंग यहां पर डिस्प्ले कर रही है स्पेन की टीम, और नाकों चने चबा दी हैं सऊदी अरेबिया को। हम सऊदी अरेबिया का आज सपोर्ट कर रहे हैं और इस उम्मीद के साथ कि वो कुछ करेंगे, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर मैच का आगाज हुआ है, इट सीम्स लाइक ऑल ओवर फॉर सऊदी अरेबिया। जमाल ने 10वें मिनट में गोल किया, ओयर जबाल ने 21वें और 24वें। सऊदी अरेबिया के जानिब से एम अल अवैस, एम अल हरबी, एम अल अमरी, हीन तबख्ती, अब्दुल्ला हामिद, एस अल दौसरी, अल खैबरी, अल दौसरी, अल अलजामी, एम अल जुएर, अल बुरकेन। डपीती ने अगली गेंद की, इसको लॉन्ग ऑन की जानिब ड्रिल किया बर्ड्स ने। अच्छा, स्पेन की अगर लाइनअप देखें तो उसमें गोलकीपर है सिमोन, अगर डिफेंडर की बात करें तो प्रो कुबारसी, लेपोर्ट, एम कोक्रेला, सेंटर में है रोड्री, सेंटर फॉरवर्ड में है पेड्री ओलोमो, और फॉरवर्ड्स में है जमाल और बदल एंड बीना। फिफ्टीन पॉइंट फाइव ओवर्स, 118 for 2, South Africa. Camp Cap is looking to Marizanne Kapp looking to hit another six here to Tapiti. Full toss, gets the treatment, and it's a boundary. Taking a little bit of room, and it's a full toss from Tapiti, giving him an angle which he uses to perfection. No chance for short extra cover fielder. Hit it into the gap. That's a great timing. And the South African dugout having some hope now. चौबीस गेंदों पर 37। इस मौके के ऊपर दोनों टीमों का स्कोर 122 था। वुड यू बिलीव इट? वुड यू बिलीव इट? 16 ओवर के बाद 122 पे दो साउथ अफ्रीका, और इतने ही रन बनाए थे इस मौके के ऊपर टीम इंडिया ने। मैजरनी कैप यहां पर बहुत ही उम्दा बारी लेती हुई। इंडियन फैंस यहां पर थोड़े से डिसअपॉइंटिंग लग रहे हैं। It is
Quite obvious the reason. So Shifali Verma to continue. इस ग्रुप में इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच भी काफी इंटरेस्टिंग होगा. मैरिजन कैप ने बहुत ही उम्दा इनिंग्स खेली और मैच में काफी हद तक वापस ले आई हैं साउथ अफ्रीका को. शॉर्ट गेंद और कैच दे बैठी ब्रिट्स डीप स्क्वायर लेग के ऊपर. ब्रिट्स हैव टू डिपार्ट इंपॉर्टेंट स्टेज के ऊपर, जंक्चर के ऊपर. यहां विकेट मिली है इंडिया को. दिस कुड बी अ मेक और ब्रेक. शॉर्ट गेंद थी, इसको खेला लेकिन क्लियर नहीं कर पाई स्क्वायर लेग को. सो टैस्मेन ब्रिट्स 40 रन 36 गेंदों में बनाने के बाद वापस. इन साउथ अफ्रीका 122 for 3 नीडिंग 37 of 23. डी क्लर्क अब आई हैं नई बैटर. डी क्लर्क स्ट्राइक रेट 106 का है. सो नॉट दैट गुड. गुड डिलीवरी. गुड डिलीवरी फ्रॉम वर्मा. सईद साहब को वेलकम करते हैं जी. सईद साहब खुशामदीद कहते हैं आपको. वालेकुम सलाम. सईद साहब कह रहे हैं जी बांग्लादेश वालों के साथ क्या हुआ. बांग्लादेश वालों के साथ बहुत बुरा हुआ जी. सईद साहब 3-0 से उनको T20 में मारा इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने. और ऑस्ट्रेलिया की ये T20 में कदरे स्ट्रॉन्गर साइड थी जिसने आखिरकार उनको 3-0 से शिकस्त दी इन देयर बैकयार्ड्स. लेकिन ओडीआई में बांग्लादेश बहरहाल सीरीज 2-1 से जीतने में कामयाब हुआ था. सीधा खेली है और क्या ये छक्का होगा. क्या ये छक्का होगा कैप की जानिब से. अंपायर यहां पर रेफर कर रही हैं थर्ड अंपायर से कि दरियाफ्त किया और छक्का. मैरिजन कैप ने इस गेंद को स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड छक्के के लिए खेल दिया है. और इस दफा आई थिंक कैच दे बैटिंग है और ड्रॉप. My goodness. My goodness. It was a match or lost catch. Oh my goodness. Catches, win matches, that's their call. And it was a very, very straightforward catch and catch of Cap 2. She drops a sitter. And have a look at Verma.
She is not impressed one bit. South African fans impressed though. बालाजी 18 गेंदों पर 29 रन चाहिए. कैप अगर विकेट पर रही, so then it will be a walk in the park for South Africa. But if she gone, I think India have a big chance. India have a big chance. Siri Charani, 3 for 16. 17 बॉलों पे 28 रह गए हैं. चरानी टू कंटिन्यू. ऑफ स्टंप से बाहर ये गेंद, और गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की जाने. 2 रन बन जाएंगे. डिपीटी isn't chasing this round. जी सही साहब, अंपायर भी फीमेल ही हैं दोनों, लेकिन हमने मेंस अंपायर भी देखे हैं. और स्टंप आउट हो जाएंगे यहां पर. डी क्लर्क, ह्यूज विकेट है फॉर सीरी. But umpire is, what is it she is saying? Umpire is saying something else. Is it a stumping or what? Down the wicket he comes. She drilled it. Yeah, it's not given. Surprising. Even not referred to the umpire, third umpire. This time she hits it over the cover for 4. Beautifully struck from D. Clark. That's what she was achieving in the previous delivery. 22 or 14 now. South Africa in within a good chance here. Bowled him, neck and crop. She is trying one too many, and fourth wicket down for South Africa. 137 for 4. I think this is needless from de Klerk. Should have given strike to the cap, and the idea could have been right, but have a look at Harmanpreet. She is happy, chappy at the moment. Last ball of the over number 18. After this will be a penultimate over. Who will bowl it? But I think this was a needless wicket given away by South Africa. Cuts and beautifully struck. It's going to be 4 runs and a very vital boundary here for Tryon on a very first ball. And in the end of the spell of Seri Charan, in excellent spell, 3 for 24. South Africa after 18, 141 for 4, requiring 12, requiring 18 from 12 deliveries. And Velvet is happy chappy in the dressing room. In the last ball, the captain of India was happy. In this ball, on this ball, yes, captain of South Africa is happy. It's evenly poised. It's even. It's even square. Even Steven rather.
12 गेंदों पर 18 कैप अगर हैं till the last ball it would be. And have a look at the win predictor. South Africa 77% and Tapiti to continue. India need a wicket here, and that too of Cap, I guess. Another single, 16 of 10. One boundary is required here for South Africa. This time she hits it down towards deep mid wicket, going to be 6, and it is. Cap is playing absolutely magnificently well, and now it's going to be South Africa winning this match with time to spare because it's 9 of 10 now. And look at South Africans in the crowd; they're absolutely happy. And this is just a disappointment for Indian players, fans, and many more. 3.3 overs deputy, none for 36. Will Cap go for another one? Yes, she go for it, but doesn't connect in the middle of the stick. Only getting a single on this occasion. 8 of 9 now. In fact, 9 of 8. Cap go to Troyon and have a word with her. All four outside the 25 yards on black side. वेल वालेकुम सलाम गुरमानी भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? वेलकम। बड़ी देर की मेहरबान आते आते मैं तो यही कहूंगा आपको, सैयद सॉरी उमैर गुरमानी साहब। And she goes for another 6. Yes, it is. And look at Cap, absolutely happy. And look at the face of Harmanpreet Kaur. She's not looking impressed. She's not looking pleased. But thousands and thousands of Indian fans been heartbroken here by this onslaught of Marizanne Kapp. 71 meter 6. And once she hit this one, she knew that's game over. Game for them. भाई लाइव फेस कैम के साथ स्कोर कोड होना चाहिए जी, होना चाहिए, लेकिन अपडेट मैं कर रहा हूँ कमेंट बॉक्स में। कोशिश है कि जल्द अज जल्द जो है कोई सॉफ्टवेयर हो, लेकिन स्कोरिंग का मेरे ख्याल में मसला है। अगर आप दूसरा लाइव दिखाते हैं ना तो इट्स एन इशू आई गेस। बेटी के पास मोबाइल था, नो इशू, इट्स कैन हैपन। और वैसे भी आज फादर डे है, तो आप अपनी बेटी को खुश करें।
And this going to be 4 runs, and this could be game for South Africa. India lost a thriller here, and South Africa is all happy here, and they won a thriller, and all jubilation here for South Africa. They beat the world champion of ODI format. South Africa beat India by 6 wickets, and what a clinical chase and courtesy. Marizanne Kapp, she was the star of this match and played absolutely magnificently well. And India has been down here at in Old Trafford, Manchester, against South Africa, and now South Africa have a very good chance of qualifying for the semi, because this was the match which can decide the first two of three strongest team of this group, which is Australia, South Africa, and India. So India now, by losing this game, will have a tough ask to qualify alongside Australia now. They're still not out of it, but this was a very important match, South Africa versus India. Whoever wins this have a bright chance to qualify with Australia into the semis from this group. Do Dala. जी गुरबानी साहब, आप बताएं जरा इस मैच के ऊपर। अब इंडिया ने मैच ये लॉस किया है, तो इसका खमियाजा इनको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो इस ग्रुप से 95% क्वालिफाई कर चुका है, और दूसरी दो टीमों में से एक जो टीम हो सकती थी वो साउथ अफ्रीका और इंडिया, और इसके लिए इंडिया और साउथ अफ्रीका का आज का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट था। जो भी ये मैच जीतती उसके लिए रास्ता काफी हमवार हो जाना था फॉर क्वालिफाइंग इनटू द क्वालिफाइंग फॉर द सेमी। सो इसरार कतर ने भी हमें ज्वाइन किया। वेलकम इसरार। अच्छा मैच हुआ बिल्कुल, लेकिन जिस तरह चेज किया एट द एंड साउथ अफ्रीका, मुझे लग नहीं रहा था, जब 6 ओवर में 25 रन थे, 2 खिलाड़ी आउट थे, तो वहां से कैप ने जिस तरह मैच निकाला, इट वाज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। लेकिन साउथ अफ्रीका की वो जो डिक्लार्क थी, जिसने मैच मिड मैच में इंटरव्यू दिया था, उसने उसी टाइम कहा था कि वी आर कॉन्फिडेंट टू चेज दिस डाउन बिकॉज वी हैव रिस्ट्रिक्टेड देम बिलो पार। साउथ अफ्रीका के चांसेस ज्यादा हो गए हैं अब, क्योंकि अगर ये मैच हार जाते तो फिर तो साउथ अफ्रीका गई थी, अब चांसेस हो गए। कैप ने भाई 45 गेंदों पर 81 रन का 81 रन का ये नॉक खेला, और 40 रन बनाए ब्रिट्स ने, 20 रन बनाए वॉलवर्ट, और 10 रन बनाए ट्रोयन ने। सो गुड बैटिंग एफर्ट फ्रॉम साउथ अफ्रीका। गुरमानी स्पोर्ट्स कह रहे हैं गुड मैच। यस, इट वाज अ गुड मैच, बट एट द एंड ऑफ द डे साउथ अफ्रीका इज द विनिंग साइड। तो पॉइंट्स टेबल जरा फुटबॉल का भी स्कोर देख लें यार, क्या हुआ है।
हाफ टाइम पे स्पेन ने 3 गोल किए और सऊदी अरेबिया ने कोई गोल नहीं किया। तो ये मैच अब तकरीबन जो है स्पेन के हाथ में चला गया। ये मैं बात कर रहा हूँ फीफा वर्ल्ड कप के मैच की, जो आज स्पेन और सऊदी अरेबिया के दरमियान था। अभी जारी है, हाफ टाइम है। ग्रुप एच का ये मुकाबला है और काफी ज्यादा हमें उम्मीदें थी कि शायद सऊदी अरेबिया कुछ सरप्राइज करे, कोई अपसेट करे, लेकिन इट सीम्स हाईली अनलाइकली। तो कैप को यहाँ पर मैन ऑफ द मैच दिया गया है, मैरिजिन कैप को, फॉर हिज आउटस्टैंडिंग नॉक। बॉलिंग भी अच्छी की और आखिर में बैटिंग भी। तो शी इज अ वेरी गुड ऑलराउंडर फॉर साउथ अफ्रीका। तो चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया गुरमानी स्पोर्ट्स फॉर योर वैल्यूएबल कमेंट्स, वैल्यूएबल फीडबैक। बाकी सब लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। So another match has been gone for this ICC Women's T20 World Cup. India is lost today against South Africa. So let's see कि अब इस ग्रुप में क्या सिचुएशन बनती है। आई थिंक मुझे ऐसे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका इस ग्रुप से अब क्वालिफाई करेंगे। इंडिया के चांसेस हैं अभी भी, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इट्स गोइंग टू बी ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। और दूसरे ग्रुप में से मुझे इंग्लैंड और न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज में से 2 टीमें जाती हुई नजर आई। एक तो इंग्लैंड हो जाएगी, दूसरी वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड में से एक ही। तो लेट्स सी कि क्या बनता है। सो वी विल बी कवरिंग दिस वन इन कमिंग मैचेस ऑफ आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप। पाकिस्तान बाहर हो चुका है। सो स्टे ट्यून विद ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह सुनने के बाद।